Barnik, speaking of bilateral trade and also speaking of trade relations going forward, I think any trade package between the two countries will solely be judged on its ability to be able to narrow some of that trade imbalance that continues to exist, and that of course is a point in question here. And we talked about, and Mithali also emphasized on need for India's pharma products to go to Russia, agri products to go to Russia, perhaps a fisheries relationship there can also be deepened. But how viable is it in a war scenario like today? So I think let us evaluate two separate scenarios. I think during war and with Western sanctions on and with low convertibility of the Russian ruble, I don't think there is any way for exporters to put a lot of bets on the Russian market. It may be a good time to work collaboratively to bring down import barriers into Russia, work on regulation, work on clearances, work on certifications. But till strong US sanctions remain and continue, and which may actually intensify given that the Russians are not agreeing to the peace deal offered by President Trump, I think it's hard to believe that you will see Indians go out and very aggressively export to Russia. So I think we have to be cognizant of the scenario when we are in the war. Now, post-war, I think there is a normal case to be made for a far more balanced trade relationship, and that's because once you're post-war, I think oil is a global commodity. What India is very commercial deals and the start of promising mutually beneficial projects. Let me stress, most importantly, when we conceived and proposed this forum, it was initially intended to show what multifaceted opportunities our cooperation can offer, and to make it clear the Russian delegation did not only come in order to discuss energy issues and sign contracts for the supplies of oil and gas. What we want is development of our multifaceted relations with India on various fields. His Excellency Prime Minister stressed on many occasions in our private talks that India has vast and growing opportunities in the many energy issues and sign contracts for the supplies of oil and gas. What we want is development of our multifaceted relations with India on various fields. His Excellency Prime Minister stressed on many occasions in our private talks that India has vast and growing opportunities in the many fields, but up until now they haven't been used to the extent both parties want to see it. That is exactly the reason why we convened this forum. And speaking frankly, first and foremost, it focuses on the opportunities of the Indian economy, and we want to familiarize our economic operators with these opportunities so that both parties can satisfy the needs of each other. It is essential, since those are solid and multifaceted ties between Russian and Indian businesses that are one of the main pillars of special and privileged strategic partnership of our countries. Indeed, Russia and India are long-time trade partners. Trade volumes are growing at a sustainable pace, and over the past 3 years we saw a record increase of up to 80%. As a result, last year the Russian-Indian trade volume reached $64 billion. At the same time, it's obvious that there are vast opportunities for further increase of bilateral trade and investment. Russia and India have big consumer markets and an impressive economic, technological and resource potential. Once again, I would like to stress that under the leadership of His Excellency Modi, India is conducting an absolutely independent and sovereign policy, and at the same time achieves very good results in the economic field. Today, the Indian economy is one of the fastest growing in the world. Figures speak for themselves. Over a decade, the GDP of the country has almost doubled, and in terms of the purchasing power parity, it increased by 2.5 times.
Thanks to the sound economic policy and such landmark initiatives by Prime Minister Modi as Make in India program, India is strengthening its technological sovereignty. The Indian processing and light industry, IT sector, and pharmaceuticals take leading positions in the world. In Russia, we study the Indian experience with interest, and it is used in implementation of our national programs of import substitution and localization of products with high value added. The leadership of two countries, and Prime Minister Modi and I in person, pay particular attention to deepening multifaceted economic ties between Russia and India. Following today's negotiations, we adopted the program for the development of Russian and Indian economic cooperation. This comprehensive document aims at making sure that we can achieve the goal Mr. Modi and I set for ourselves, so that we can increase the trade volume by 2030 to $100 billion. It requires most active efforts of business communities from both countries aimed at further expanding and diversification of trade volumes and building balanced structure of reciprocal trade. Given the significant trade deficit of Russia, the Russian business, our companies, are ready to manifold increase the purchase from India of a widest range of goods and services. We are interested in it, dear friends, because it makes our economy more resilient. From their part, Indian entrepreneurs, as was demonstrated by the forum, are equally interested in trading with Russia. They have something to offer, so the synergy is obvious. So it would only be logical that projects contributing to greater supplies of Indian products to Russia receive priority attention in implementation of the new export support program recently adopted by the government of Mr. Modi. From my part, I would like to assure the business circles that all useful initiatives aimed at development of mutual economic exchanges will be further supported by Russian ministries and authorities. No doubt, the key role in creating conditions for a truly free trade between our countries is played by the Intergovernmental Commission. It is important that together in close cooperation we eliminate the Romanian customs and administrative barriers which stay in the way of reciprocal movement of goods, services and capitals. In this regard, a strong impetus, as it seems, could be given by rapid signature of a preferential trade agreement between India and the Eurasian Economic Union. Free trade is unthinkable without a resilient system of bilateral settlements and reliable payment and insurance mechanisms. Tangible advantages are offered by the use of national currencies. It makes it possible to ensure uninterrupted financial transactions regardless of external developments. And obviously, accessibility of transport and logistics communications plays a crucial role. A lot is already being done in this regard. Implementation of the project to create the corridor south-north from Russia and Belarus to the Indian Ocean is ongoing, and infrastructure modernization of the Northern Sea route is being modernized in order to use it for the supplies of Indian goods to the world markets. Obviously, the cooperation of our two countries should not be limited to trade alone. We should move on and enhance our industrial cooperation. Together, we should create new cutting-edge products and strengthen technological alliances. First and foremost in such advanced and knowledge-intensive sectors as digitalization, autonomous robotics, pharmaceuticals, including synthesis of efficient pharmaceuticals and production of high-tech medicine equipment. We are ready for broad cooperation with India in the field of artificial intelligence, where our countries have already advanced a lot. Russia is interested in participating in the as I've just mentioned it to Prime Minister, we are ready to participate in the summit on artificial intelligence scheduled to take place in
India in February 2026, we will send a representative delegation. In conclusion, I would like to stress once again, further strengthening of Russian-Indian trade and investment ties and close cooperation between business communities effectively contributes to economic growth and development and greater well-being of our citizens, and therefore it meets the fundamental interests of our countries and peoples. I would like to wish to the participants and organizers of the forum all the best. Thank you for your attention. Thank you, Excellency, for sharing your vision on the immense potential of bilateral trade. Excellencies, now I respectfully invite Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to deliver his concluding remarks. Your Excellency, my friend राष्ट्रपति पुतिन, भारत और रूस बिजनेस के सभी लीडर्स, देवी और सज्जनों, नमस्कार। इंडिया रशिया बिजनेस फोरम, मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति पुतिन का ये बड़ा महत्वपूर्ण इनिशिएटिव रहा कि इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर के आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं और आप सबका मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मेरा भी आप सबके बीच आना एक बहुत प्रसन्नता का अवसर है। इस फोरम से जुड़ने के लिए और अपने बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए मैं मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बिजनेस के लिए सिंप्लीफाइड, प्रिडिक्टेबल मैकेनिज्म बनाए जा रहे हैं। भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच एफटीए पर चर्चा शुरू हो गई है और साथियों, हम अलग अलग विषयों को लेकर के भी, जैसा अभी पीयूष जी ने उल्लेख किया था और जैसा राष्ट्रपति जी ने जो संभावनाओं का वर्णन किया है, उसे देखते हुए हम बहुत कम समय में बहुत बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। बिजनेस हो या डिप्लोमेसी, किसी भी साझेदारी की नींव आपसी विश्वास है। भारत रूस संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति यही विश्वास है। यह हमारे साझे प्रयासों को दिशा भी देता है और गति भी देता है। यही वह लॉन्च पैड है जो हमें नए सपनों, नई आकांक्षाओं की उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता है। पिछले वर्ष राष्ट्रपति पुतिन और मैंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन का उस लक्ष्य को पार करने का हमने निर्धार किया था। लेकिन कल से मेरी जो राष्ट्रपति पुतिन से बात हो रही है और जिस प्रकार के पोटेंशियल नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा। ये मैं साफ देख रहा हूं। हम उस लक्ष्य को समय से पहला पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मेरा विश्वास बढ़ रहा है। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम किया जा रहा है, लेकिन साथियों, इन प्रयासों की असली शक्ति आप जैसे बिजनेस लीडर्स हैं। आपकी ऊर्जा, आपका इनोवेशन और आपका एम्बिशन, यही हमारे संयुक्त भविष्य को आकार देते हैं। फ्रेंड, पिछले 11 वर्षों में भारत में जिस स्पीड और स्केल के साथ हमने बदलाव किए हैं, वह अभूतपूर्व हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, इस सिद्धांत पर चलते हुए भारत तेजी से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की
और आगे बढ़ रहा है। और 11 वर्षों की इस रिफॉर्म यात्रा में हम न थके हैं, हम न रुके हैं। हमारे संकल्प पहले से ज्यादा मजबूत हैं और हम लक्ष्य की दिशा में बड़े आत्मविश्वास के साथ बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म और कंप्लायंसेस में कटौती, ऐसे कदम उठाए गए हैं ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले। डिफेंस और स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। इससे इन सेक्टर्स में नए अवसर बने हैं। अब हम सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में भी नई संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहे हैं। यह केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं, बल्कि माइंडसेट रिफॉर्म्स हैं। इन रिफॉर्म्स के पीछे एक ही संकल्प है, विकसित भारत। फ्रेंड्स, कल और आज आपके बीच बहुत ही उपयोगी और सार्थक चर्चाएं हुई हैं। मुझे खुशी है कि भारत और रूस के सहयोग के सभी क्षेत्रों का इस बैठक में प्रतिनिधित्व किया गया है। आप सभी के सुझावों और प्रयासों के लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरी ओर से हमारे सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विचार आपके सामने मैं रखता हूं। पहला, लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आज की बैठक में राष्ट्रपति पुतिन और मैंने हमारे कनेक्टिविटी के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करने पर बल दिया है। आईएनएसटीसी या तो फिर नॉर्दर्न सी रूट यानी चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर, इन पर हम आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जल्द ही इस दिशा में प्रगति होगी। इससे ट्रांजिट टाइम घटेगा, कॉस्ट कम होगी और बिजनेस के लिए नए मार्केट्स खुलेंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी की ताकत के साथ हम कस्टम्स, लॉजिस्टिक्स और रेगुलेटरी सिस्टम को वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर से जोड़ सकते हैं। इससे कस्टम्स क्लियरेंस तेज होगा, पेपर वर्क घटेगा और कार्गो मूवमेंट अधिक सीमलेस बनेगा। दूसरा, मरीन प्रोडक्ट्स। हाल ही में रूस द्वारा भारत से डेयरी और मरीन प्रोडक्ट्स के निर्यात के लिए भारतीय कंपनियों की लिस्ट में विस्तार किया गया है। इससे भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए नए अवसर बने हैं। भारत के हाई क्वालिटी मरीन प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडेड सी फूड, प्रोसेस्ड फूड, इसकी बड़ी मात्रा में ग्लोबल डिमांड है। हम कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स, डीप सी फिशिंग और फिशिंग हार्बर्स के मॉडर्नाइजेशन में जॉइंट वेंचर और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बना सकते हैं। इससे रूस की डोमेस्टिक डिमांड भी पूरी होगी और भारतीय उत्पादों को नए मार्केट भी मिलेंगे। तीसरा, ऑटोमोबाइल सेक्टर। भारत अफोर्डेबल, एफिशिएंट ईवीज, टू व्हीलर्स और सीएनजी मोबिलिटी सॉल्यूशंस में आज ग्लोबल लीडर है। रूस एडवांस मटेरियल का बड़ा प्रोड्यूसर है। हम मिलकर ईवी मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और शेयर्ड मोबिलिटी टेक, इसमें साझेदारी कर सकते हैं। इससे हम न केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे, बल्कि ग्लोबल साउथ, विशेषकर अफ्रीका के विकास में भी योगदान दे सकते हैं।
चौथा, फार्मा। भारत आज विश्व भर में किफायती मूल्यों पर उच्चतम क्वालिटी की दवाइयां सप्लाई कर रहा है। इसलिए भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। हम दोनों मिलकर जॉइंट वैक्सीन डेवलपमेंट, कैंसर थेरेपीज, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स और एपीआई सप्लाई चेन में सहयोग कर सकते हैं। इससे हेल्थ केयर सिक्योरिटी भी बढ़ेगी और नई इंडस्ट्रीज भी विकसित होगी। पांचवा, टेक्सटाइल। भारत के पास नेचुरल फाइबर से लेकर टेक्निकल टेक्सटाइल तक विशाल क्षमता है। डिजाइन, हैंडीक्राफ्ट्स और कारपेट्स में हमारी वैश्विक पहचान है। रूस पॉलीमर और सिंथेटिक रॉ मटेरियल्स का बड़ा प्रोड्यूसर है। हम साथ मिलकर रेजिलिएंट टेक्सटाइल वैल्यू चेन बना सकते हैं। इसी तरह फर्टिलाइजर, सिरेमिक्स, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग की कई संभावनाएं हैं। साथियों, सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने में मैन पावर मोबिलिटी की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत आज दुनिया की स्किल कैपिटल के रूप में उभर रहा है। हमारा युवा टैलेंट टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, हर क्षेत्र में ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की क्षमता रखता है। रूस की डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को देखते हुए यह साझेदारी दोनों देशों के लिए अत्यंत उपयोगी है। जब हम भारत के टैलेंट को रूसी भाषा और सॉफ्ट स्किल में ट्रेनिंग देंगे तो हम मिलकर एक ऐसी रशिया रेडी वर्कफोर्स तैयार कर सकते हैं जो दोनों देशों की शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को गति देगी। फ्रेंड्स, आज हम अपने दोनों देशों के नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा पर कई अहम हमने फैसले लिए हैं। इससे दोनों देशों के बीच टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, टूर ऑपरेटर्स के लिए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बनेगी और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। फ्रेंड्स, आज भारत और रूस को इनोवेशन, को प्रोडक्शन और को क्रिएशन की नई यात्रा पर साथ चल रहे हैं। हमारा लक्ष्य आपसी व्यापार बढ़ाने तक सीमित नहीं है। हम पूरी मानवता की भलाई सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसके लिए ग्लोबल चैलेंज का स्थायी समाधान तैयार करना है। भारत इस यात्रा में रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया, पार्टनर विथ इंडिया एंड टुगेदर लेट अस मेक फॉर द वर्ल्ड। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति पुतिन और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। That's Prime Minister Modi and Russian President Putin at the India-Russia Business Forum, speaking from Bharat Mandapam, talking about the issues and the crux of everything that was discussed between the two leaders, while also addressing the business delegation visiting from Russia alongside President Putin and discussing that they should make in India and make for the world. Among the key conversations and the key ties between the two countries that could further deepen following President Putin's visit to India could be in connectivity, logistics, marine production, automobile, pharma, textile and cooperation as well as co-creation. That's the gist of what Prime Minister Modi talked about in his address
to the business delegation there at Bharat Mandapam. Barnik Chitran Mohitro continues to be with me. You know, Barnik, speaking of what we were discussing as far as cooperations and extended cooperations between the two countries is concerned. And just before we went into break, we were also discussing how I think one key crux area that could be explored between the two countries could be by the way of technology transfer, by the way of co-manufacturing and co-creating. And that is what Prime Minister also stressed in his speech. Yeah, I think the biggest takeaway from the summit is that the relationship between India and Russia is moving beyond energy and beyond defense. I think the opportunity for India is to leverage Russian technology, Russian skill set in manufacturing, Russian skill set in engineering to sectors which are beyond the original sectors of oil, energy, or even defense. I think what is being outlined by the Prime Minister very clearly is for India and Russia to work very closely in contributing to the Make in India initiative of India and being one of the primary sources of technology which India is driving. Let us also look at one more announcement which was there in both the speeches. I think there was mention of AI and digitization. To be fair, compared to where US and China are, both India and Russia are a little bit of laggards compared to where these economies have raced ahead. Again, that's an area of cooperation where India and Russia can work together to use AI not only on the software side but also on the hardware and the physical AI side. So again, it's a good start for a broader cooperation, and the hyphenation between India and Russia need not be only about oil. That's what the world thinks this is about. I think we've now signaled very clearly to the world that we are ready to go do more business with Russia and to do more with them. And this is not just related to buying cheap oil from Russia. All right, not just related to buying cheap oil from Russia, there is a need for better partnerships in various key sectors which were identified by Prime Minister Modi. In fact, towards the end, he also talked about India working with Russia to produce, in fact, joint vaccine, and that's something that could also be discussed. And Russia-ready workforce, I mean, given that there is enough and more human capital in India that can be used readily in markets abroad, I think people-to-people contact and people-to-people mobility is also a key point in discussion here, where India has the workforce that Russia may need in future. Yeah, I think the big announcement there, I think India just announced today that a 30-day tourist visa online can be obtained by Russians online. I think the expectation is of reciprocity from the Russians, where it will be easier to get visas to travel to Russia and also get work permits. I think the bet which India wants to make is that a lot of our workforce can actually be moved to Russia in the times of peace, where they can find employment and jobs. So people to people has always been a very core part of the friendship and affection India and Russia have for each other. I think this has to be solidified with more people movement across both orders. So again, some baby steps that taken, hopefully more action in the coming weeks and months on this front.